Yes, Sumaji, you can start. Start with Purnamadam, right, ma'am? Starting. Yes. Purnamada. Shanti part. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Next, Sukanya ji, right? Yes. Shall I repeat? Yes. Yes. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ishavasya sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tyaktena bhunjitha maghृतः kasya svidhanam. Om Ishavasya sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tyaktena bhunjita maghृतः kasya svidhanam. Two time revise. Okay. One more time. Yes. Om Ishavasya sarvam yatkinch jagatyam jagat tena tyaktena bhunjita maghृतः kasya svidhanam. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छथ समाः एवं त्वयि नान्यतेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. 2 times, ma'am. Yes. One by one. Okay, you Sukanya ji. कुर्वन्नेवेह कर्माणि विजिविशेषतं समाह एवं त्वयि नान्यान्ते तेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नर. Shall I chant? Oh, okay, you chant. Like that, what? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः एवं त्वयि नान्यतेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. कुर्वन्नेवेह कर्माणि विजिविशेषतः समाः एवं त्वयि नान्यतेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. असुर्या नाम ते लोक अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः. असूर्यानाम ते लोका अन्तेन तमसा स्मृताः तांसे प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः. असुर्या नाम ते लोक
अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः. Now it's turn to Diksha ji and Ankita ji. Ma'am, start. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद यदेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् फिर तदर्थवाक्यो नयनन्ति तिष्ठत् तद्धावतो अन्तनयनन्ति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति. Ankita ji. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनन्न देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यतेति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिश्व ददाति. तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्रस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता. तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्विन्तिके तदन्तरस्तः सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. Revise Disha ji. One more time. तदेजति तदेजति तनैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वयश्च बाह्यता. तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता. यास्तु सर्वाणि भूतानि आत्म एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्सते. यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मवभूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यतः. तस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वमनुपश्यतः. सपर्यागात् शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपापविध्यम फिर था कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यथातयत अर्थान व्यधत फिर शाश्वतीभ्य समाभ्य. सपर्यागादाचुक्रमकायाव्रणम् अस्मिन्विरं शुद्धं पापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथत्यतो अर्थान् व्यध्याचाश्वतीभ्यः समाभ्यः. अंकिता जी आपको कम याद है ये. सुमा जी और सुकन्या आप दोनों भी ये रिपीट कीजिए वन बाय वन. Okay, ji. From where, ji? Start. This one. Yes, this one. Saparyagat Shukram. Saparyagat Shukram Akayam Avranam Asnaviram Shuddham Apapaviddham Kavir Manishi Paribhuhu Swayambhuhu Yata Datyado Attan Vyadat Shashwadipyaha Samapyaha. Shmaji.
Next one. Next one. Which one, ma'am? Will you please? Sumaji. Sumaji? Okay, next one. अन्तं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः. Next one. अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो याउ विद्याय रतः. Next one. अन्धं तम प्रविशन्ति ये विद्यां पुष्यते ततो भूय एव ते तमो यायु विद्यायां रतः. Yes. अन्यदेव आहुः विद्यया अन्यत् आहुः अविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे चचक्षिरे. Nastad vichachakshan. Shall I repeat one more time? Yes, you can. अन्यदेव आहुः विद्यया अन्यत् आहुः अविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरः चचक्षिरे. Next one. Ma'am, Yes, next one. Yes. Start. Anyadevaahurvidyaya yat dahuravidyaya. Ma'am, this tone I lost. अन्ये देवाहुर्विद्यान्यदाहुर अविद्या इति शुश्रुं वेधीराणां ये नस्त्वद्विचचक्षिरे. Anyadevaahurvidyaya yat dahuravidyaya iti shushrum dhiranam ye nastadvichakshire. चचक्षिरे चचक्षिरे नस्तद्वि चचक्षिरे. नस्तद्वि चचक्षिरे. Yes, next one. विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयस्सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते. Very good. Next one. विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतम् अश्नुते. Next one. विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमुष्णते. Next one. विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्याम् अमृतम् अश्नुते. That vidya and avidya, those individual who follow together vidya and avidya, that will be good. भयं सः और भयस्सः. यस्तद्वेदो Bhayam saha. भयं सः. Yes, yes.
उभयम सह। हियर इज, हम म क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ उभयम है ना, उभयम, उभयम सह, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर यस्तद्वेदो भयम सह. While pronouncing yastat vedho ubhayam saha. Like that? Yes. Okay. Okay. Splitting up. Yes. Yes, next one, Sumaji. अंधं तमः प्रविशन्ति ये सद्भूतिमुपासते तथो भूय इव ते तमो य उ सम्भूया रताः Next. सम्भूया रताः. अन्धं तमा प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो या उ सम्भूत्या रतः. Next one. अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः. Very good. This is about those who follow Asambhuti. Sambhuti and Sambhuti. Sambhuti and Ah, that is it. Dishaji have to chant, ma'am. Dishaji. Yes, you can chant, Disha. Sukanya ji, what is this? Okay. Andham tama pravishanti ye sambhutimupashyate tato bhuya eva te tamo yayu samyabhutam ratah. Very good. Hari. सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते. It is already over, no ma'am? No, ये श्लोक नहीं हुआ है. नहीं हुआ है? Oh, नहीं. This This is actually about Sambhuti नहीं हुआ है ना पिछले वाला इसीलिए लग रहा है this मुझे. is about Sambhuti and Asambhuti together. together. An individual should follow. Right. Okay, ma'am. Next one. सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीत्वा सम्भूत्याम् अमृतम् अश्नुते. सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते. सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतम् अश्नुते. Very, very important slok. Yes, ma'am. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृन् सत्यधर्माय दृष्टये. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये. Yes. This is also important. अभी मुझे पता चला है, मैं कुछ देख रही थी और पढ़ रही थी, तो this श्लोक is also very important. पूषन्न एकर्षे, पूषन्न एकर्षे यम सूर्य
प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसौ पुरुषः सोहम अस्मि। हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे ईश्वर, हे सबके नियंता सूर्य, हे भक्तों या ज्ञानियों के परम लक्ष्य रूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन रश्मियों को, ओके, सो दे आर टॉकिंग दैट एन इंडिविजुअल इज टॉकिंग टू द सन। इन रश्मियों को एकत्र कीजिए या हटा लीजिए, इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में मिला लीजिए, जो आपको अतिशय कल्याण में दिव्य स्वरूप है। उस आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। जो सूर्य का आत्मा, जो वह है सूर्य की आत्मा, वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है, मैं वही हूँ। So here Bhakt is talking to his God कि please show reflect on me, reflect on my karma, see on me, look at me, this type of things he is saying कि जितनी भी आपसे जो अराइज हो रही हैं अलग अलग किरणें, उनको मेरे तक पहुंचाओ या मुझे भी अपने आप में समेट लो। ठीक है, यस, कैन एनीवन ट्राई टू स्पीक दिस? पूषन्नेकर्षेयम सूर्यप्रजापत्यव्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो अयं यो असौ यो अस यो यो सव यो सावसौ, यो पर के बाद में लिटिल एक छोटा सा आ आएगा, छोटा सा बिल्कुल, यो युवास सावसौ। युवासावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। आ नहीं आएगा, बस यहाँ पर आपको स्पेस देना है। You will have to give space there. So सोऽहमस्मि हम अस्मि यो सावसौ, योऽसावसौ पुरुषः यो सावसौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि। योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषन्निकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। Shall I try? यस यस, ध्यान देना है, इस श्लोक में सोहम की बात आई है। सोहम अस्मि, मैं ही, सोहम अस्मि, मैं भी वही हूँ, मैं भी ब्रह्म ही हूँ, ईश्वर हूँ। यस, पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्यव्यूह रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। Yes, I will continue. पूषन्नेकर्षे यमसूर्य प्राजापत्यव्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि। दिशाजी, are you chant?
पूषन्येकरशेयमा सूर्य प्रजापतय व्यूहा रश्मिन् समूहा तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तते पश्यामि यो असवस्यु पुरुषः सोऽहम् अस्मि. Very good. Most important. Yes. Who is going to chant? Yeah. वायुरनिलम् अमृतमथेन्द भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृते स्मरकृतः स्मरकृतो स्मरकृतः स्मर. The same वायुरनिलम् अमृतम् अधेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर. Yes. Okay. वायुरनिलम् अमृतम् मतेतं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर. वायुरनिलम् अमृतम् अथेदम् भस्मातं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्रतं स्मर क्रतो स्मर क्रतं स्मर. वायुरनिलम् अमृतम् अथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर. Yes. अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराम राणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम. अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुरानमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम. अग्नेनये सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमयुक्त विधे नम उक्तिं नम विधेम. नम उक्तिं विधेम. अग्निदान सुपथारये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुद्ध अस्मत् जुहुराणामेणो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम. Yes, this shall repeat again after me. Yoyodhyasmajuhuranmeno bhuyishtham te nama uktim vidhema. युयुद्ध अस्मात् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम. Yoyodhyasmajuhuranmeno. युयुद्ध अस्मत् जुहुराणमेनो. ठीक. Yes, Ankita ji. Yoyodhyasmajuhuranmeno bhuyishtham te nama uktim vidhema. युयुधो यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तद्विधेम. Very good.
So it's complete your Ishavasya Upanishad. Please chant one time this shloka. You had got to know that this is the Shanti part in before Kena Upanishad, or we can say every Samaveda Upanishad. Every Upanishad which is related with Samved, वो हमेशा इसी शांति पाठ से स्टार्ट होंगे. ओके, ये स्टार्ट. ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गनि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्यामम ब्रह्मनिकारकरोत् अनिराक् this I don't know. अनिराकरणमस्त्व निराकरणं नेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ आप्यायन्तु ममाघानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्त्वा निराकरणमेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. वेरी गुड. ॐ आप्यायन्तु मामङ्गानि वाक् प्राचक्षुः श्रोत्रमति बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मणोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरमस्तत्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. वेरी गुड. ॐ आप्यायन्तु ममानग्नि वाक् प्राणश्चक्षु अंगानि अंगानि मम अंगानि. ओम आप्यायन्तु मम अंगानि. ॐ आप्यायन्तु मम इसको ऐड अंगानि कैसे करोगे दिशा? ऐड दीज टू, मम प्लस अंगानि. ममंगानि. हाँ. ओके. ॐ आप्यायन्तु ममंगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मणोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मम ब्रह्म निराकरोत् वाणिराक् अरणं नेस्तु तदात्मानि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मायि सन्तु ते मायि सन्तु. ये ओम मई है कि मई है? मई सुविघ्नं. यस. स्टार्ट. ॐ केनोषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो
युनक्ति ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। वेरी गुड। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणा प्रथमा प्रेतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। ॐ केनेषितां पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथमा प्रयतियुक्त केनेषितां वचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कायुदेवो युनक्ति। काकुदेवोनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचोह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। स्टार्ट। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मन यदा यद्वाचोह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुरतिमृत् मुच्छधीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। रिपीट सेकंड लाइन। चक्षु चक्षुष। Look here. One wait. Chakshusha. Chakshu. चक्षुष Then atimuch. अतिमुच्य Chakshur atimuch. yes got it चक्षुष चक्षुर अतिमुच्य Yeah. Yes. Shall I Right. repeat one more time? Okay. Shrotrasya shrotram manaso mano yadvachoh vacham sa u pranasya pranaha chakshusha chakshur adimuchya dhiraha pretya samalokadamrita bhavanti. This is about the characteristics of God. जिसको मन से भी नहीं समझ सकते हैं, जिससे मन मनुष्य का जाना हुआ होता है, ऐसा कहते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान। मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। इट मीन्स मन इज नॉट एबल टू टेल और कैन नो अबाउट द ब्रह्म बिकॉज मन इज ऑल्सो मेड अप बाय और फॉर्म्स बाय गॉड। दैट्स व्हाई यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। रिपीट। यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।
Repeat this one. Iha ched vedidat satyamasti na chediha vedin mahati vinashtihi bhuteshu bhutesu vichitya dhiraha pratyasma lokadamrita bhavanti. हुह चेत वेदेति तत इह चेत वेदेदित सत्यमस्ति न चोदिहा वेदिन्महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति. Next. इह चेद् वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्यास्मालोकादमृता भवन्ति. इह चेदविदेदथ सत्यमस्ति न चेदिहवे दिन्महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेतस्मलोकदमृत भवन्ति. तस्यैतपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वाङ्गानि satyam apyatanam. Remember this shloka is these all shlokas now we are covering. These are from Kenopanishad. Okay. Yes, chant. तस्यैतपोधमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्. Nice. तस्य तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्. सत्यम् आयतनम्. Shanti Path. This about Kathopanishad. Yes. Chant this slok. Yes, anyone? सहनावतु सहनौ सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Next one. ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Very good. नेक्स्ट श्लोक देखेंगे हम. फर्स्ट अध्याय फर्स्ट वल्ली 26th श्लोक याद रखेंगे. फर्स्ट अध्याय फर्स्ट वल्ली 26th श्लोक.
26th. Yes. शोभावमर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव त्वयैव वाहास्त्वनृत्यगीते. Yes. शोभावमर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव भागास्तव नृत्यगीते तवैव भागास्त्वनृत्यगीते. I think I tried only. Not. Well done. Anyone? This is same shloka is also mentioned in Bhagavad Gita. You can mention Gita, Bhagavad Gita, 5th chapter, 22 shlok is there. Okay, the same shloka. Yes, I have. I'm just checking out. Chapter 5th, shlok number, ma'am? 22. Chapter. Shloka 22. Shloka is not same, but meaning it's same. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. That is about भोग. बुद्धिमान विवेकी पुरुष भोग में नहीं रमते हैं. They are not going in that, in the temporary or this mayajal bhog. Anyone want to chant? Me. Yes. शोभावमर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव. अपि सर्वं जीवितम् अल्पेव वहस्ताव नृत्याय गीते. अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्त्वनृत्यगीते. अपि सर्वं जीवितमल्पेव तवैव वस्तावनृत्याय गीते. Next श्लोक is इन जो भी अभी बता रही हूं मैं ढूंढकर उन सभी को आप हाईलाइट कर लीजिए इन रेफरेंसेस को. This is also important. 27th. न वेत्तेन तर्पणियो मनुष्यो लप्स्यामहे. न वेत्तेन तर्पणियो न मनुष्यो लप्स्यामहे. वित्तं द्राक्षं चेत्वा वित्तं त्वा
वित्तम् अद्राक्षं चेत्त्वा जीविष्यामो यावदिशेष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव वरस्तु मे वरणीयः स एव। मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं होता, जबकि आपके दर्शन पा लिए हैं मैंने, धन को भी पा ही लेंगे। आप जब तक शासन करते रहेंगे हम जीते ही रहेंगे। मेरे मांगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है। Here is also about that भोग विलास का जो ये संसार है, ये इससे कभी तृप्ति नहीं होगी। ना वित्तेन तर्पणियों मनुष्यो, मनुष्य की वित्त वेल्थ से तर्पणियों कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती ना। ओके, चलो हाईलाइट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो श्लोक है। ओके, प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली और द्वितीय श्लोक। प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली द्वितीय श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तव सम, इसकी तो टोन मुझे ही नहीं आ रही है, मैं भूल गई। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। ये जो स है, this स is came in this line and tau in this same line. श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमा वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेयश्च प्रेयस, there is two marg of life, Shrey marg and Prey marg. Both are Shrey and Prey. They are two marg of life or karma. Yes. जो धीर मनुष्य है, इंटेलिजेंट समझदार है, धीरो भी, they are following Shreya. Yes. Who is going to chant? I'll try. श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत स्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽपि प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मन्ते योगक्षेमाद् वृणीते, प्रेयो मन्तो योगक्षेमाद् वृणीते। Very good. श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्य तौ संपरित्य विविनत्य धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वनीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते। Very good. Anyone else? श्रेयश्च प्रेयश्च. Next श्लोक is अध्याय फर्स्ट वल्ली द्वितीय 16th श्लोक. This is 16th श्लोक. This is about Akshar Brahma, Om Pranav. एतत् देवाक्षरम, एतत् एवाक्षरम, एतत्यवाक्षरम ब्रह्म, एतत् अक्षरम
एतत्येव एतत्येव अक्षरम, एतदेव अक्षरम ब्रह्म, एतदेव वाक्षरम परम, वही ब्रह्म है, वही परम है। एतद्यवाक्षरम ज्ञात्वा, उसको जो जान लिया, एक उस अक्षर को, वो यत् इच्छति तस्य तत्, उसकी जो इच्छा हो वही उसको मिल जाता है। एतद्यवाक्षरम ब्रह्म, एतद्यवाक्षरम परम, एतद्यवाक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्, जो उसकी इच्छा हो, तस्य तत्, that he can get whatever his desire, that desire can complete. yes, ये रेफरेंस आप सभी लिख रहे हो ना, जो हम चैंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, no one is going to chant this. Shall I chant? Yes. एतत् एव अक्षरं ब्रह्म, एतद्दयेव अक्षरं परम्, एतद्दयेव अक्षरं ज्ञात्वा यो यदि इच्छति तस्य तत्। Very good. एतद्येवाक्षरं ब्रह्म, एतद्येवाक्षरं परम्, एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। Very good. This is most important shlok about Brahm. Very, very important shloka, also mentioned in Bhagavad Gita also, this shlok. Okay, so इसको अच्छे से आप याद कीजिए। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन् बभुव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, न जायते, न जन्म लेता है, म्रियते, न मरता है, विपश्चिन्न, नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा, न जायते, न तो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, नॉट बर्थ नॉट डाई। नायम कुतश्चिन बभूव कश्चित, ना ही वो किसी से जन्म लेता है। आत्मा कैन नॉट टेक बर्थ फ्रॉम समवन। कुतश्चित बभूव, कोई भी, अर्थात यह न तो किसी का कार्य है न कारण है। दिस इज नॉट द बेस ऑफ एनीथिंग एंड नॉट द कॉज ऑफ एनीथिंग। अजो नित्य, ये क्या है? दिस इज नित्य, नित्य है, शाश्वत है, पुराणों है, पुराणों का भी पुराण। पुराण क्या है? हमारे वेद उपनिषद। दैट्स लाइक दिस आत्मा इज ऑल्सो द एंशिएंट ऑफ एवरीवन। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, we cannot hanyate hanyamane, when sharir die then atma will not die. Ma'am, this one is in Bhagavad Gita, na? Yes, this is in Bhagavad Gita also. श्लोक इन भगवद गीता, श्लोक नंबर, दूसरा अध्याय, 20वां श्लोक, 220। Yes, chant this one. न जायते म्रियते वा विपश् one time you tell how to pronounce. न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चित्। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चित् अजो
नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Nice. न जायते म्रियते वा न जायते म्रियते वा विपश्चिन् न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चित् अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Very good. Ma'am, Yes. shall I chant? Actually I came back just now. Okay, you came back. Yeah. Very I'll good. chant. Yes. Ma'am, that tone is little different. I chant in mantra style. No worry, you just chant. It's your freedom. न जायते म्रियते वा विपश्चन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Very good. Yes, वाला chanting है इसी। ये अस्व्यासा में ऐसे No ma'am, I learnt Vedic chanting. ना जयते वा कदाचित्। That is there in Asvyasa also, but Vedic chanting slightly differ. Shall we move? Anyone want to chant? Okay. देखो यहाँ भी है, गीता में भी न जायते म्रियते वा कदाचिन. But that tone is little different in Gita what they sing. Okay. Mantra, this thing is हाँ, tone can be differ. It's different. Okay. हाँ, can be differ. एग्जाम में टोन थोड़ी पूछेंगे. So why? Fine. In order to memorize, it will be easy if we follow any tone. That why. That's true, ma'am. Yeah. Our tone yeah. only we can memorize very well. Yes. That anoraniya, that is not there. Huh? No. The next slok is, just wait. This shloka. 23. Adhyay first, Valli do, 23 shloka. Very important. Yes, this one. नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विवृणोते तनुं स्वाम् तस्मैष आत्मा विवृणोते तनुं स्वाम्. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट आत्मा. Okay. Shall I repeat? It is about परमात्मा अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलते हैं, उसी को मिलते हैं जिसको वे स्वीकार करते हैं. परमात्मा उसी को मिलते हैं जिसको परमात्मा स्वीकार करते हैं. परमात्मा when परमात्मा want to move to someone. Okay. समझ में आया सभी को? Okay. Shall I repeat? Yes, I'll yes. try. नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम् तस्यैष आत्मा
विवृणुते तनुं स्वाम। ये जो भी हम चांट कर रहे हैं, एवरीवन राइट डाउन इन अ पेज और paste it in front of your wall where you sit for learn. Okay, Okay, ma'am. and again chant every day, and also write down the Upanishad name, that each shloka is in from Kenopanishad, these from Kathopanishad, like this. Yes, Okay. next one. Yeah, ma'am. नायमात्वा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव वैष वृणुतेन तेन तेन लभ्य तथैष आत्मा विवृणुते तनुस्मा। Very good. Next one. Okay. Next shlok is important shlok is from Adhyay first Valli 3. प्रथम अध्याय का third Valli. First Adhyay, this third Valli. Shlok number 3. You had also learned of this. Atmanam rathinam vidhi shariram rathamev tu buddhim tu sarathim vidhi manah pragamev cha manah pragrahamev cha. Pragraham मतलब pragraham लगाम, that ropes which one can tie the horses. Yes, chant. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगहमेव च। Next one. आत्मानं रथीनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। Next one. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं बुद्धि मनः प्रग्रहमेव च। Very good. Chant again. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं बुद्धिं मनः Okay. Okay, done. Question will ask like Atmanam blank vidhi shariram blank tu buddhim tu blank vidhi manah blank cha. ये जो ब्लैंक आएगा ना, इसको आपको भरना होगा. आत्मानम रथिनम शरीरम रथमेव बुद्धिम तु सारथिम मनः प्रग्रहमेव. Got it? Yes, ma'am. And this is also related with, this is also the same. Yes, chant. This is the half 50% that sloka, 50% this sloka. Half completed both. Indriyani hayanahur vishayam vamsam steshu gocharan atmendriyam manoyuktam bhoktyam manishinaha ज्ञानीजन, that धीर पुरुष इंद्रियाणी, इंद्रियों को, हयान घोड़े को, हयान इंद्रियाणी हयानाहुर विषयाम. जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो क्या करते हैं? कंट्रोल देयर Senses. इंद्रिया, कंट्रोल देयर horses by tightening those ropes, by tightening their मन, कंट्रोल देयर मन. विषयों को, उन घोड़ों के जो विषय है वो, horses always want to get all the grasses in their front, means subjects. So indriyas are always want to vendors in the vishay subjects,
but that buddhiman purush will have to control their mind. आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम, शरीर इंद्रिय और मन इन सब के साथ रहने वाला जो जीवात्मा है, भोक्ता, उसे कहते हैं. ओके, तो इन सभी को कंट्रोल करना होता है. यस. इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः. इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः. वेरी गुड. इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयां तेषु गोचराम् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्त्याहुर्मनीषिणः. भोक्त्याहुर्मनीषिणः. वेरी गुड. नेक्स्ट श्लोक इज प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली 14th श्लोक. 14th श्लोक. This one. Yes, chant. Yes. उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् बोधत शूरस्य धारा निशिता दुरस्त्या दुर्गम पतस्तवयो वदन्ति. No ma'am, this is tone gone. Okay, no worry. Maybe I will try. उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरानि बोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति. Shall I try? ये भी टोन हो सकता है इसका. उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरानि बोधत शूरस्य धारा निशिता. नहीं Ma'am, actually ma'am, there is a difference in the way in north it is sung and in south it is. yes. Right? It's Now totally our rag. goal, so Maji, now Huh? our goal is only to learn. Yeah. But Yes. I'm feeling that difference. Yes. I uh, also know there is very difference between in south and north toning. South is like proper halant and straightforward. everything. Straight like this song like we are हाँ, not used to song learn. से क्या होता है ना, by Ma'am. practicing song with song like toning, then we can remember easily, or it like it's madhur like है ना. Yeah, that is हाँ. there. But here usually mantra chanting like only, like straightforward, like that Yes. we are used to. उत्तिष्ठ जाग्रत् पराप्य वरानि बोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतः सत कवयो वदन्ति. वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. उत्तिष्ठित करके उत्तिष्ठित, then they will give blank. Okay, and maybe they can give the whole shlok and can ask about the reference or shlok or Upanishad name. चलिए. Anyone else? Shall I try? उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत्त्वकर्वयो वदन्ति. Very good. उत्तिष्ठ जाग्रत्
प्राप्य वरानि बोधत् शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गं पतिस्तत् कवयो वदन्ति। वेरी गुड। चला गया है थोड़ा। ओके, ओके। नेक्स्ट श्लोक इज द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली। द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली। This one. This is, I think, also in Bhagavad Gita also. Urdhva Moolam Adha Shakham. Similar like. ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा श्लोक, दूसरा सेकंड चैप्टर, थर्ड वल्ली, फर्स्ट श्लोक। ऊर्ध्व मूलम मूलो वाक्याशाक एषो अश्वत्थः सनातनः। इसको बस समझना है आपको। ऊर्ध्व मूलम, that tree is like ऊर्ध्व मूलम, their base is the upward side. एषो अश्वत्थः सनातन, that is known as sanatana people वृक्ष। अश्वत्थ, Ashwath means people ka vriksha. Okay, so they can ask Ashwath Sanatana Vriksha is like their base is upward side and downside is their branches. So ये भी आप टिक कर लीजिए। अभी हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। Next श्लोक is second chapter, third valli, 11th श्लोक। Eleventh श्लोक, this one. ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। भवति योगो हि प्रभवाप्ययो। These two parts of yogs may be prabhava and may be apyaya. That's why every time we will have to need the consistency and vairagya bhavna, detachment and consistency in yoga abhyas. Because if we will not consistent, then it may be apyaya. Apyaya means ast ho jayega, है ना? And every time if we have consistency, then it will be prabhava, uday, arising. Okay, so it's like, ये आपको समझ आया? उदय और अस्त होना, it's like study. Whenever we are every time consistency in study, every time we get something new, and if we stop the studying, then it's like degradation of our knowledge. We can relate like this. Okay, so ये भी योग की परिभाषा है, ये very important. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, श्लोक देकर आपसे पूछेंगे ये जो योग की परिभाषा है ये कौन से उपनिषद में है, इन विच उपनिषद दिस रेफरेंस और दिस डेफिनेशन ऑफ योग इज मेंशन्ड. ओके, so I think this is completed Katho Upanishad, है ना? This is ma'am And- only 3 na of chapter 2. Chapter 2, Valli 3.
chapter 2. Okay. Prashna Upanishad, this is Shanti part. In every Krishna Atharva Veda, this is the Shanti part. Every Upanishad, how many Upanishad are related with Atharva Veda? Those are start with this Shanti part. Ma'am, shall I? Yes, you can chant. Yeah. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Very good. Next one. I'll try. Yes. ॐ भद्रं कर्णेभिः विशृण्याम देवा भद्रं पश्येमाक्षि भर्जयजत्राः स्थिरैरङ्गैः रङ्गैस्तृष्ट्वां सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः स्वस्ति नस्ताक्ष. How to pronounce the swasti last line in स्वस्ति नस्त्या स्वस्ति which one? last line स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. Very good. Next Upanishad पे चले. This is important in Prashna Upanishad. Prashna Upanishad is main important are the concepts like who ask to whom question, which question and which is the answer. That's are important only. Ma'am, only one in this Prashna Upanishad, huh? Yes. Okay, that is Shanti part, first one. In Mundaka Upanishad, come to Mundak 3, Khand first. Third Mundak, first Khand. Page number 269. This one? This shloka. क्या है ये? मुंडक 3, third मुंडक, खंड first, श्लोक number 5 and 6. Have you remembered this shloka or the meaning of this shloka we had studied in Mundaka Upanishad? Yes. Satya, Tapa, Brahmacharya. Sadhana for getting Paramatma. Sadhana for getting Paramatma. Satya Bhasan, Satyen, Tapasa and Brahmacharyen.
one can get यथार्थ ज्ञान. ओके, सो आपको ये याद रखना है. सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण सत्येन लभ्यस्तपसा. सत्य, तपस और सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्येण. By these we get the Ishvara and we got to know about the Atma. Okay. And next is this one, Satyameva Jayati, Satyameva Jayate. This quote is referred or extract from which Upanishad? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. सत्यमेव जयते, this quote is taken from which Upanishad? It's Mundaka मुंडको, Upanishad. मुंडकोपनिषद. Which मुंडक, which खंड? थर्ड मुंडक, खंड फर्स्ट एंड सिक्स्थ श्लोका. ये ध्यान रखना है. ओके, दिस इज अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ सत्य. एंड आफ्टर दिस द श्लोका नंबर द्वितीय खंड, मुंडक 3, द्वितीय खंड, थर्ड श्लोक. हियर इज द्वितीय खंड, third shlok, very important, about Atma. We had also chanted this shlok, I think. Yes, ma'am. Bahuna Shrutena. Yes. बहुना श्रुतेन. ये हमने पहले चैंट किया है कोई उपनिषद में. कठोर, Yeah, it is chanted. कठोर और केन उपनिषद, किसमें हमने ये रिवाइज किया है? Kena, I think. हम्म, Taisha Atma Vivrunateena. ये तो डाउट है. I think we will read it in another Upanishad also, this shloka. बट आई थिंक हमने आज भी इसको कवर किया है. Yes, you please chant if you got. हाँ, chant. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तथैष आत्मा विवृणुते तनुं स्माम्. I think just before we read that shloka, this one, we read this one. नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेद्या न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्य स्थैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्. स्थैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्. Anyone else? Next one. Okay, so in Nayam Atma, that slok I think we had learned in Kathopanishad. Am I right? Yes. I found this one. This same shloka is in Adhyay first, Dvitiya Valli and 23 shloka. Okay. Write In down. Kathopanishad also. Okay. Yes, write down this. और ये शायद भगवद गीता में भी है, शायद हम पढ़ेंगे, तो इसको राइट डाउन करो. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. which one these shloka, क्वेश्चन आ सकता है. which one these shloka which has came in Kathopanishad and Mundakopanishad? In Kathopanishad, which chapter, ma'am? In Kathopanishad, chapter 1, Adhyay 2 and 23 shloka. 1 to 23. Okay.
ओके। और ये हमने किस में पढ़ा है मुंडकोपनिषद में? थर्ड मुंडक, थर्ड मुंडक, थर्ड खंड, थर्ड श्लोका, थर्ड मुंडक, सेकंड खंड, फोर्थ श्लोका. Sorry, सेकंड please pardon. थर्ड मुंडक, सेकंड श्लोक, थर्ड उपनिषद. यस, ठीक है. इसको थर्ड मुंडक, थर्ड खंड, नो थर्ड खंड. नो नो, I learned it now. Third mundak, second khand, द्वितीय खंड, थर्ड श्लोका. ओके ओके, हाँ, करेक्ट कीजिए. ओके. मुंडक कंप्लीट. यस. Ma'am, then questions tomorrow, ma'am. Monday. Yes, Okay, maybe Sunday. ma'am, please. Sunday. Then only. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. We got holiday for Sunday. Okay. No worry, it's your choice. Okay. After that, Oh. maybe. Ma'am, today ask sir to post the recording today only, no? This one, so that we can write. What are you saying, ma'am? Please pardon. No, this recording of today's whatever chanting you said, no, we have to write. Yes. So ask sir to post it today so that we can. Yes, every day post in night also, but I try to post or upload now. Okay, ma'am. Because yesterday Brihadaranyaka, I think we didn't get. I thought of Yes, framing sir, questions. that uploading, sir, is going somewhere. Okay, okay, ma'am. No. So I will upload that. Okay. 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 So these are enough for No. in all Upanishads. In Okay. Chandogya or Brihadaranyaka Upanishad, I taught you yesterday about the important shlokas. Mm. Okay, I told you, so that you can highlight it, that shloka, and will remember. Okay, paste it on the front of your wall. Then every day revise that this shloka in this Upanishad, and this is the in which this is the reference of this shloka. Ma'am, yesterday you told the important shloka in Chandogya and Brihadaranyaka. Yes, Brihadaranyaka Upanishad. Yesterday, Okay. Brihadaranyaka only we did, no? Yes, One. Brihadaranyaka. Yeah. Anyone have question? No.